Good morning, everybody. Today we will discuss about the angular velocity. So, the angular velocity is a velocity of the vector measure of the rotation rate. That means you have to remember the rotation rate. Rotation means how they are moving. It revolving. Angular acceleration. This means the angular displacement upon time. That's related known as the angular velocity. So how it refers that how fast an object rotates or revolves around the relative another point. In simple words, the angular acceleration is the time rate at which the object rotates or revolves about the axis. The pictorial representation is given over here. This theta is basically the angular displacement, how it rotates. In the similar manner, it is moving anti-clockwise. It considered to be a positive. So the angular velocity is represented by omega, and that will be 2 pi f. F is the basically the frequency. Can be theta, and you can understand that the theta is basically r s upon r. S is the angular displacement and r is the radius. So theta, that is v upon r, is the omega, that is the angular velocity. It can be represented just like in with the right hand. If it is rotated in anti-clockwise direction, so the rotation of the displacement is represented by the curl finger. Then the thumb will represent the direction of omega, that is angular velocity. It can be shown in a simple manner that omega is equal to delta theta upon delta t. Theta is the angular displacement, while delta t is the rate of that means small time, the time interval we can say as. So omega, that is delta theta, is theta 2 minus the final angular displacement upon the initial displacement upon the time period. So angular velocity is a vector quantity and describes the rate of a change of an angular displacement, which specified the angular speed with the direction. That's what it's representing. You have to remember that it is basically the change of an angular displacement. This you have to remember, or the rotational speed of an object and the axis about the object is rotating. It can be shown with the right hand. Another picture of right hand, the rotation, if it is goes in anti-clockwise direction, the angular displacement. So the direction of the thumb will represent the direction of the angular displacement. They represent the angular, if the I mean to say that if the angular displacement rotate in anti-clockwise direction, then thumb will represent the direction of angular velocity. Angular velocity, you have to remember, that is the omega. It can show in a different picture. Again, the how it rotates, the thumb will represent the direction of angular velocity. Now if the thumb will represent in the with a different way, if you see that the up goes the displacement angular velocity, if the thumb will rotate in revert order, then it means that the rotation is goes in clockwise direction. Then the angular velocity is represented by the downward direction, downward to the, and you can say as the phone or the plane of the phone. आज हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है एंगुलर वेक्टर मेजर्ड, जो है रोटेशन का, एक जगह रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अभी एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? जो क्लॉक जैसे घूमती है ऐसे, उसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है. ये कितनी तेज़ी से हल्के चलेगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम इन टाइम जो है एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है. ये इस तरीके से देख सकते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट होता है. इसे ओमेगा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ये इसका फॉर्मूला जो होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है v अपॉन आर. v इज द लीनियर वेलोसिटी, r जो है रेडियस है. इसे हम थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू r अपॉन s. s जो है आपको आर्क है और r जो है रेडियस है.
तो इसे हम दूसरे फॉर्मूले से भी दिख सकते हैं, और इसे अगर आप पिक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हैं इससे भी देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अप होगी थंब के साइड। थंब यानी अंगूठे को दिखाएगा, यानी कि अगर आपकी उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं डिस्प्लेसमेंट दिखाती हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, तो आपका जो थंब अंगूठा है वो क्या दिखाएगा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी दिखाएगा। इसे जैसे मैंने अभी बताया, तो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, और इसे हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी लिखते हैं। डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो उसको डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड से करेंगे तो हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना है, यहाँ हर एक चीज़ का मीनिंग समझा रखा है, दिख भी रखा है। एंगुलर वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो डिस्क्राइब करती है कितनी फास्ट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे आप पिछले वाली पिक्चर में देख सकते हैं कितनी फास्ट, कितनी तेज़ी के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या हल्के के हो रहा है, इसे दिखाता है। और इसे एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, या फिर रोटेशन स्पीड, और इसका एक्सिस भी दिखाते हैं। यहाँ अगर आप देखें जैसे इस प्लेन में जैसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो होता है वो ठीक अपोजिट होता है, इस तरह जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है, जैसे थंब रिप्रेजेंट करें, यानी राइट हैंड सीधे हाथ को ले, जो अगर मुड़ी उंगलियां जो हैं डिस्प्लेसमेंट दिखाती हैं तो जो अंगूठा है वो हमको क्या दिखाएगा, उसकी एंगुलर स्पीड बताएगा या एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, इसे हम दूसरे पिक्चर से भी देख सकते हैं। यहाँ जैसे दिखा रखा है, यहाँ एक हैंडल दिखा रखा है, हैंडल में जो है वो एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अगर हम अपने हाथ को नीचे कर देंगे तो अगर आप देखें इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम जो है यहाँ अंगूठा जो है ऊपर की साइड है, और अगर आप जो मुड़ी हुई उंगलियाँ इस तरह से मोड़ दें कि ये क्लॉकवाइज घूमे, तो जो डायरेक्शन है, जो दिशा है अंगूठे की, वो नीचे हो जाएगी यहाँ की साइड, तो ये एंगुलर वेलोसिटी दिखाएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट द इंटीमेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।